Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Tabinda Shoaib and I am working as an English teacher at Divisional Public School and College, Sahiwal. I welcome you all in today's English class that is about nouns, number. In our previous lesson, we have discussed all the rules and today we will practice them. Before starting the lesson, I would like to share the objectives with you. By the end of the lesson, students will be able to identify the use of singular and plural nouns in text and convert singular nouns into plurals. Now, let us quickly revise all the rules that we have learned in our previous lesson with the help of a mind map. So, our rule number 1 is most of the nouns make their plurals by simply adding s in the end. For example, leg, legs. Rule number 2. If the nouns are ending in s, double s, sh, ch, or x, we will add es. For example, bus will become buses. If the noun ends in y, we will drop y and add ies. For example, lady. Lady has y in the end, so we will drop y and add ies. So it will become ladies. And if we have a vowel before y, we will add only s. For example, toy. It will become toys. Nouns ending in f or fe, we will drop f or fe and add ves. For example, life has fe in the end. So we'll cut them and add ves. So it will become lives. Next rule is some nouns ending in f or fe, we will simply add s. For example, roof will become roofs. Some nouns ending in o, we will add only s. For example, radio will become radios. But some nouns, if they are ending in o, we will add es. For example, zero. Zero has also o in the end, but we will add here es and it will become zeros. Now we have two exceptions in the end. Exception number 1 is some nouns completely change. They completely change their spellings. For example, foot. Foot will become feet. Some nouns do not have any plural form. They will remain the same in the singular form and in the plural form. For example, music. Music will remain music in both the forms. I hope you all have been able to revise all the rules very well. So now come to exercise A, that is change the number of the following nouns from the singular to the plurals. इन दिए गए सिंगुलर नाउन्स को हमने प्लूरल में चेंज करना है. For example, our first word is story. Story has y in the end. So we will drop y and add ies in the end. It will become stories. Next word is day. We will add simply s in the end and it will become days. Watch. We have ch in the end. So
It will become watches when we will add es in the end. Next word is scarf. स्कार्फ हम इसको दो तरह से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं. एक तो हम इसके आगे सिंपल एस लगा दें, या हम एफ को कट करके इसकी जगह वीईएस लगा दें. तो क्या बन जाएगा? स्कार्फ्स या स्कार्व्स. नेक्स्ट वर्ड इज काइट. इसके साथ हम सिंपली एस ऐड करेंगे और ये क्या बनेगा? काइट्स. नेक्स्ट वर्ड इज काफ. काफ के एंड में एफ को कट करके हम वीईएस ऐड करेंगे और इसका प्लूरल क्या होगा? काव्स. नेक्स्ट वर्ड इज सिटी. सिटीज. वेरी गुड. Next word is mass. Mass have double S in the end, so we will add ES. Masses. Wish. Wish has SH in the end, so we will add ES and it will become wishes. Mango. It has O in the end, so we will add ES. Mangoes. ये हमारी एक्सरसाइज ए थी. आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी. अब हम एक्सरसाइज बी देखते हैं. चेंज द फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स, सिंगुलर फॉर्म्स टू प्लूरल एंड प्लूरल फॉर्म्स टू सिंगुलर. सेंटेंस नंबर 1 इज द बर्ड फ्लू अवे. बर्ड यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, इसको हमने प्लूरल में कन्वर्ट करना है. The birds flew away. Sentence number 2. The man stood near the field and watched the boy play. इस सेंटेंस में दो नाउन्स हैं जिनको हमने चेंज करना है. पहला नाउन मैन है जो कि प्लूरल है, इसको हम सिंगुलर में चेंज करेंगे. The man stood near the field and watched the boy. बॉय को हमने प्लूरल कर देना है और ये हो जाएगा boys. Boys play. Very good. Sentence number 3. The baby was playing with its mother. यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन्स हैं जिनको हम प्लूरल में चेंज करेंगे. बेबी. बेबी के लास्ट में वाई है, हम वाई को ड्रॉप करके उसकी जगह क्या ऐड करेंगे? IES. The babies were playing with their mothers. Sentence number 4. The cook made an omelette with an egg and a tomato. The cooks made an omelette with eggs and tomatoes. Tomatoes के लास्ट में O है जिसके बाद हम ES ऐड करेंगे. Sentence number 5. Mother put the glass and the dish on the shelf. इस सेंटेंस में तीन सिंगुलर नाउन्स दिए गए हैं जिनको हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे. Mother put the glasses and the dishes on the shelves. Sentence number 6. The child could hear the wolf howling. Child एक irregular noun है, इनके स्पेलिंग सेम नहीं होते. जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो चाइल्ड चिल्ड्रन बन जाएगा. और वॉल्फ के लास्ट में क्योंकि एफ है, एफ को हम हटा के इसकी जगह वीईएस ऐड करेंगे. तो ये सेंटेंस कैसे प्लूरल बनेगा? द चिल्ड्रन कुड हियर द वॉल्व्स हाउलिंग. सेंटेंस नंबर 7. द लेडीज सैट ऑन सोफास एंड द मैन वर स्टैंडिंग. इस सेंटेंस में दोनों नाउन्स प्लूरल हैं और इनको हमने सिंगुलर में चेंज करना है. लेडी. The lady sat on sofa and the man was standing. Sentence number 8. The fairies and the elf danced around the sleeping woman. Fairies plural noun है, इसको हम singular करेंगे. Elf एक singular noun है, इसको हमने plural में change करना है और women को भी हमने plural में change करना है. The fairy and the elves danced around the sleeping women. Sentence number 9 is
All the furniture was made of wood. फर्नीचर एक एक्सेप्शनल नाउन है जिसको प्लूरल में भी वही सेम वर्ड रहता है, ये चेंज नहीं होता. All the furniture was made of wood. Sentence number 10. You should go to a dentist to have your tooth looked at. You should go to a dentist to have your teeth looked at. Sentence number 11. The visitors stood and watched the deer in the park. इस सेंटेंस में दो नाउन्स हैं जिनको हमने चेंज करना है. विजिटर को हमने सिंगुलर में चेंज करना है और डियर को प्लूरल में. The visitors stood and watched the deer in the park. Deer will remain same in both the singular and plural form. Sentence number 12. At night, the mouse would come out and play. इसमें एक ही नाउन है जिसको हम चेंज करेंगे और वो इरेगुलर नाउन है, उसके स्पेलिंग चेंज हो जाएंगे. At night, the mice would come out and play. Sentence number 13. The girl plucked a cherry from the tree. इन दोनों सिंगुलर नाउन्स को हम प्लूरल बनाएंगे. चेरी के एंड में वाई है जिसको ड्रॉप करके हम IES ऐड कर देंगे. The girl plucked cherries from the trees. Sentence number 14 is, there was an old dress and a broken toy in the box. इन तीनों सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में चेंज कैसे करेंगे? There were old dresses and broken toys in the boxes. And the last sentence is, Sam bought a loaf of bread. He wanted to make a sandwich. लोफ के एंड पे एफ है जिसकी जगह हम VES लगा देंगे और सैंडविच के लास्ट में CH है, इसके साथ हम ES ऐड करेंगे. Sam bought loaves of bread. He wanted to make sandwiches. आई होप कि आप सबको आज का काम बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा. नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क एंड योर होमवर्क इज that you have to change the given singular nouns into plurals. आपने इन सब nouns को plural में change करना है. That's all from my side for today. Thank you. Allah Hafiz.